हेलो बच्चों, वेलकम टू बोलो फिजिक्स क्लासेस। बोलो फिजिक्स क्लासेस का स्वागत है। हमारे चैनल में 1 आवर में एक चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट एंड पीवाईक्यूज एंड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो भी बहुत यूजफुल है फॉर द आईआईटी मेंस एंड नीट एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, सो मेनी पीपल्स आर व्यूइंग बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। आप सब्सक्राइब करो, एक्सटेंशन करो इन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप में। ठीक है, टुडे आई विल गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज दैट ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशन मैकेनिक्स। इसमें कोर कॉन्सेप्ट क्या है देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, कपल एंड एंगुलर मोमेंटम एंड रोलिंग मोशन एंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया बेटा, जैसे इसमें नहीं लिखे। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, सपोज कंसिडर ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग इन ए सर्कुलर मोशन है। ओके, वो ए पॉइंट पर शुरू हो गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल गए। ओके, विच इज मेड सम एंगल थीटा है ऐसा। ठीक है, एंड आर्क लेंथ एल है एंड रेडियल वेक्टर आर एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसको थीटा इक्वल क्या लिखना पड़ता है, बोलो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर हो जाता है ना। इसका यूज क्या है, जो क्या हो जाता है बेटा, रेडियन अपॉन सेकंड और रेडियन पर सेकंड हो जाता है। इसको आर प्लस इज इक्वल क्या लिखना पड़ता है, थीटा इंटू आर है ना। इसको डेरिवेट करो, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर कांस्टेंट है इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, dl अपॉन dt इसको क्या हो जाता है बेटा, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाता है। और इसको अगेन डेरिवेट करो, dv अपॉन dt इज इक्वल टू r इंटू डी ओमेगा अपॉन dt। dv अपॉन dt इसको क्या हो जाता है, टेंजेंटल एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन. So what is the omega where? Omega is called as the angular velocity. Omega is equal to d theta by dt. The rate of change of angular displacement is called as the angular velocity. इसके यूज क्या हो जाता है बेटा, रेडियन पर सेकंड हो जाते हैं। ठीक है, और इसको अगेन डेरिवेट करो, अल्फा इज इक्वल क्या हो जाता है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी हो जाते हैं। और ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन T2 माइनस T1 हो जाता है। इसका यूनिट्स रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ ए व्हेन ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज कंसीडर ए पार्टिकल बेटा in non-uniform circular motion में which has to be started at point of A with a velocity omega I. After t seconds later, it could be reached at point of B and it has got the final velocity omega F with an angular acceleration alpha in a t second में which has made some angle theta है। ठीक है, so what are the equations of motions? In case of linear motion, you know what is that, V is equal to u प्लस ए टी हो जाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू एन माइनस 1/2 हो जाता है। दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन ए linear motion. So whereas in case of circular motion, the equations of motions will becomes this all values compare with this. Okay, v means क्या हो जाता है बेटा, ओमेगा एफ। ओमेगा एफ इज इक्वल टू u means ओमेगा आई प्लस a means अल्फा into t. This is the first equation of motion है बेटा। नेक्स्ट s is equal ut plus of a t square। s का रेस्पॉन्सिबल वेरिएबल क्या है बेटा, थीटा है। ओके, थीटा इज इक्वल टू ut, u means वो इनिशियल वेलोसिटी u है ना, ओमेगा आई प्लस ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर हो जाते हैं। नेक्स्ट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। फाइनल वेलोसिटी v से कंपेयर करो, v है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट मींस ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस
ओमेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा हो जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन एस एन इज इक्वल यू प्लस 8n-1/2 दैट इज इक्वल टू थीटा n इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा आई इंटू 2n-1/2. So these are the equation of motions in non-uniform circular motion of a object. ठीक है। Suppose if the angular velocity is variable है, इसको angular displacement कैसे निकालना पड़ता है बोलो? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी है। डी थीटा इज इक्वल क्या हो जाता है बेटा? ओमेगा इंटू डी टी हो जाता है। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी। फॉर वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा निकालना पड़ता है। सो फॉर द वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन को, फॉर वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी हो जाता है ना। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी टी हो जाता है। ठीक है। लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ऑफ एम वी स्क्वायर हो जाता है बेटा। रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल क्या हो जाता है? k इज इक्वल टू ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। लीनियर मोशन में वर्क w इज इक्वल क्या हो जाता है? वर्क w इज इक्वल टू f डॉट इंटू s हो जाता है। एंगल सर्कुलर मोशन में वर्क इज इक्वल क्या हो जाता है बेटा? टाउ इंटू थीटा हो जाता है। ठीक है। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, और 2025 जेई मेंस का प्रॉब्लम है बेटा। 2025 जेई का, जेई मेंस का प्रॉब्लम है 2025 और रिसेंट प्रॉब्लम है। A circular disc of radius r meters and mass m kilograms is rotating around the axis perpendicular to the disc. An external torque applied to the disc such that it was produce an angular displacement of 5d square minus 80 in the position of rotating of the disc as a function of time. So how much power delivered by the applied torque when t is equal to 2 seconds? ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए बेटे इसने, और डिस्क है। ठीक है। डिस्क का मास दिए और रेडियस दिए। इसका रेडियस कितने बेटा? r है। इसका मास m किलोग्राम दिए, m kilograms, which is rotating with respect to an axis which is passing through the center perpendicular to the डिस्क है बेटा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to mr square by 2 हो जाता है ना। So some external torque has to be acting over this. Due to that, displacement has to be changes like this. Then we have to calculate how much amount of the power is delivered. So before going to calculate the power, first we should have to calculate the angular velocity and acceleration here beta. Because of power P is equal to the product of torque and angular velocity, वो भी निकालना पड़ता है। और power P is equal to tau is equal to I alpha into omega. We need find out what is that alpha and omega. इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए, इससे ओमेगा और अल्फा दो भी मिल जाते। देखो इधर। सो थीटा इज इक्वल क्या दिया बेटा? 5t स्क्वायर माइनस 80 दिए। इसका डेरिवेटिव करो, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी हो जाते। दैट इज इक्वल टू वो क्या मिल जाते? 10t माइनस 8 मिल जाते। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड में ओमेगा इज इक्वल क्या मिल जाता है बोलो? 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 रेडियन पर सेकंड हो जाता है। अगेन अल्फा निकालना हो जाता है बेटा। इसको अगेन डेरिवेट करो। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी हो जाता है। ठीक है। दैट इज इक्वल टू 10 हो जाता है। डेरिवेटिव ऑफ 10 इज t, रिमेनिंग इज 0, दैट इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दोनों वैल्यू इसमें लगो। दैट इज p इज इक्वल टू I मीन्स mr स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है। अल्फा वैल्यू इज 10, ओमेगा वैल्यू इज कितने बेटा? 12 है। सो 2 1 जा 2 5 जा, दैट इज इक्वल p इज इक्वल कितने हो जाते हैं बोलो? 60 mr स्क्वायर वाट्स। ठीक है। लिखो और प्रॉब्लम देखो बेटा।
A ball is spun with angular acceleration alpha is equal to 60 square minus 2t, where t is in second, alpha is radian per second. At t is equal to 0, the ball has a velocity of 10 radian per second and angular position 4 radians. The most appropriate expression for the angular position of the ball would be is equal to how much? इसमें क्या दिया बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन दिए, अल्फा इज इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 2t दिए. एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे मिलते बेटा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is called as angular acceleration, that is the 60 square minus 2t हो जाते, और d omega is equal to 60 square minus 2t into dt है बेटा. इंटीग्रेशन करो बोथ साइड्स, लिमिट्स क्या हो जाता है बेटा? 10 to ओमेगा, इसमें क्या हो जाता है? 0 to t, that is equal to ओमेगा minus 10 is equal to, इसको इंटीग्रेशन करो क्या मिल जाता है? 60 cube by 3 minus 2t square by 2 हो जाता है. बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 to t है, 2 गेट्स कैंसिल हो जाते हैं. इसमें ओमेगा वैल्यू क्या मिल जाता है बेटा? ओमेगा माइनस 10 इज इक्वल टू, बोलो 60 क्यूब 2 1 जा 2 से गेट्स कैंसिल है, 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू कितने मिलते हैं बेटा? 10 प्लस 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर है. बट एंगल वेलोसिटी आ गया बेटा, अभी एंगल पोजीशन निकालना पड़ता है. एंगल वेलोसिटी एंगल पोजीशन में कन्वर्ट करो, क्या हो जाता है? डी थीटा बाई डी टी हो जाता है ना. डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल 10 प्लस 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर हो जाता है, और डी थीटा इज इक्वल टू 10 प्लस 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी है ना. इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन, सो एट द टाइम 4 दिए, 4 to थीटा, इसमें क्या हो जाता है बेटा? 0 to t है, दैट इज कॉल्ड थीटा माइनस 4. थीटा माइनस 4 इज इक्वल क्या मिल जाता है? बोलो 10t प्लस 2t पावर ऑफ 4 अपॉन 4 माइनस t क्यूब बाई 3 बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 to t है बेटा. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 10t प्लस t पावर ऑफ 4 बाई 2 हो जाते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, माइनस t क्यूब बाई 3 है, रिमेनिंग टर्म 0 है, वो भी निकालना जरूरत भी नहीं. थीटा इज इक्वल क्या मिल जाता है? बोलो 4 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3. ठीक है, मजा आ रहा है? लिखो. और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, ए फ्लाईव्हील इज accelerated uniformly from rest, rotates through a 5 radians in the first second. That means at t is equal to 1 second पे radian means क्या दिया बेटा? थीटा is equal to 5 radian दिए, and the displacement दिए. The angle rotated by the wheel in the next second will be is equal to how much? That means at t is equal to 2 second में, t is equal to 2 सेकंड में कितने एंगल वो रोटेट कर रहे हैं वो भी निकालना पड़ता है. इनिशियल में थीटा एस इज इक्वल यूटी प्लस ऑफ के टी स्क्वायर यूज करो. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर है. ओके, टी इज इक्वल 1 सेकंड में थीटा इज इक्वल कितने बेटा? 5, वो भी लगाओ इसमें, एंड ओमेगा नॉट वुड बी इज इक्वल टू 0 हो गए, दैट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0 प्लस ऑफ अल्फा टी स्क्वायर है. टी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर हो जाते बेटा, 1 स्क्वायर, इससे अल्फा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया. ओके, नेक्स्ट सेकंड में दैट मीन्स थीटा एन इज इक्वल क्या हो जाता है बेटा? थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2e इंटू 2en माइनस 1, वेयर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 हो गए, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, t is equal to 2 सेकंड, नेक्स्ट सेकंड मींस 1 प्लस 1, 2 सेकंड्स हो गए. थीटा n इज इक्वल क्या हो जाता है? बोलो अल्फा बाई 2 मींस 10 बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 हो जाता है,
2 ones are 5, that is theta n is equal to 5 into 3, that is 15 रेडियन हो जाते हैं. ठीक है, बहुत आसानी है. देखो प्रॉब्लम देखो बेटा, जे मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है. A cylindrical vessel containing liquid rotating about its axis so that it's a liquid side. The radius of vessel was given there. R is equal to 5 centimeters दिए बेटा, and the angular speed rotation is omega radian per second. The difference in the height h in the centimeter of the liquid at the center of the vessel and its side will be is equal to how much, वो भी निकालना पड़ता है बेटा, वो भी निकालना पड़ता है. देखो इधर एटमॉस्फेयर कितने बेटा, इधर एटमॉस्फेयर कितने एक्ट कर रहे हैं, वो भी P1 इज इक्वल टू P नॉट ले, इधर भी कितने एक्ट कर रहे हैं, P2 इज इक्वल टू P नॉट हो जाता है. ओके, when the liquid is rotating like this, okay, when the liquid is rotating like this, ऐसा रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, इसमें एटमॉस्फेयर ओ पॉइंट में एटमॉस्फेयर दोनों भी सेम हो जाता है बेटा. ठीक है, वो भी इसका हाइट निकालना पड़ता है. क्या निकालना पड़ता है, वो इसका हाइट निकालना पड़ता है. इसका हाइट कितने, वो भी निकालना पड़ता है. Where the pressure exerted at this point is given by कितने हो जाते हैं बेटा, h rho g, and which is rotating with an angular velocity omega. ठीक है, with respect to this point the total kinetic energy क्या हो जाता है बेटा, of rho v square, which is equal to this pressure energy plus atmosphere energy का दोनों को बराबर हो जाते हैं. that is of rho v square is equal क्या हो जाता है, बोलो डेल्टा p plus of डेल्टा p plus rho gh का बराबर हो जाते हैं. that means the potential energy and potential energy, sum of the potential energy and pressure energy per unit mass तो बराबर हो जाता है बेटा. इसको क्या लिख रहा हूँ, v is equal to r ओमेगा हो जाते हैं. ठीक है, of rho into v means v square means क्या हो जाता है, बोलो r square omega square is equal to delta p. क्या है बेटा, delta p is equal to P2 minus P1 is equal to P naught minus P naught is equal to 0 हो जाता है. ठीक है, that is equal to 0 plus of rho gh है, खाली rho gh अब both sides रो gets cancel हो गए, h निकालना पड़ता है, r square omega square upon 2g हो जाता है. बट r वैल्यू कितने दिए बेटा, 5 सेंटीमीटर, that is equal to 5 square into omega square upon 2g, that is equal to कितना हो जाता है, बोलो 25 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g. दिस इज हाइट मिल जाता है. ठीक है, देखो बेटा बहुत आसानी है प्रॉब्लम. देखो अरे प्रॉब्लम देखो बेटा, JEE 2022 में पूछे, a particle of mass m is fixed at one end and a light spring having a force constant k and unrestricted length is L was given. The other end is fixed. The system is given an angular speed omega about the fixed end of the spring such that it rotates in a circle, gravity space. Then the stitch in the spring would be is equal to how much कुछ है बेटा. इनिशियल में सपोज कंसिडर फिक्स्ड एक्सिस ऐसे ले और फिक्स्ड एक्सिस है. ठीक है, a particle of mass m is fixed है बेटा, ऐसे फिक्स की है. a particle of mass m is fixed की है. ओके, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितने दिए बेटा, और L दिए. when we have given some amount of the angular speed ऐसा omega, then what happening is that the spring has to be elongated है, हो जाता है बेटा. the spring has to be elongated ऐसा, and the particle is rotating with an angular velocity omega. The spring has to be elongated. कितना दूर elongate हो गया, we don't know. Let's x length elongate हो गया बेटा, इनिशियल लेंथ L है, और पूरा लेंथ क्या हो जाता है, बोलो L plus x हो जाते हैं ना. Then the restoring force would be acting like this direction, that is F is equal to kx, which is equal to the radial force को बराबर हो जाता है. So what is the radial force? The radial force acting on the object is given by Fr is equal to mv square by r, that is r m
r ओमेगा स्क्वायर और m स्क्वायर बाहर दोनों भी बराबर है बेटा. But what is r? The radial length of r is given by m into l plus x into ओमेगा स्क्वायर हो जाता है. ठीक है. Where the radial force is equal to the restoring force को बराबर हो जाता है. That is kx. Kx is equal to ml ओमेगा स्क्वायर प्लस mx ओमेगा स्क्वायर. तो दोनों से मल्टीप्लिकेशन करो ऐसा. ठीक है. वो एक्स वैल्यू इधर लेके आओ, क्या मिलता है x इंटू के माइनस m ओमेगा स्क्वायर वुड बी इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर हो जाते हैं ना. इसमें x निकालना पड़ता है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बोलो. x इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर हो जाता है. इतना एक्सटेंशन हो जाता है. ठीक है. मजा आ रहा है नहीं? देखो बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? से सपोज कंसिडर a particle of mass m which is rotating from a perpendicular distance or perpendicular or from the axis of rotation. So its moment of inertia of the particle can be defined as I is equal to mr square. I is equal to mr square is called as a moment of inertia. That means the product of mass and perpendicular distance from the axis of rotation is called as the moment of inertia. So what are the its units beta? बोलो, what are its units? किलोग्राम मीटर स्क्वायर है. किलोग्राम मीटर स्क्वायर are the units of the moment of inertia. The moment of inertia depends upon the axis of rotation of the distance and the distribution of the mass है बेटा. Suppose if r is equal to 0, if small r ले बेटा, और small r है, small r है. If r is equal to 0 क्या हो जाता है? The moment of inertia I is equal to 0. Okay. For the point particles, if the axis of rotation is passing through its center, there is no have the radius beta for the point particles को, so its moment of inertia 0 हो जाता है. ठीक है. For the dissipated particles are rotating like this from the axis of rotation, at different distances. Let us consider m1 mass, which is at a perpendicular distance of r1, which is rotating like this, and the second one is a m2 mass, which is at a perpendicular distance of r2, and so on mn mass, which is at a perpendicular distance of rn from the axis of rotation. So its moment of inertia of the system can be defined as I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus and so on plus mn rn square हो जाता है बेटा. इसका moment of inertia where the k is equal to the radius of gyration of the system can be defined as k is equal to square root of r1 square plus r2 square plus and so on plus rn square upon n is called as the radius of gyration है बेटा. इसका moment of inertia I is equal to mr square is equal to mk square को बराबर हो जाता है पूरा moment of inertia, where r is responsible what is that the radius of gyration हो जाता है. ठीक है. Suppose consider a system of two particles है बेटा. A particle of mass m1 and second particle of mass m2. These two particles are separated at certain distance r. So find the moment of inertia from this axis of rotation. कितने हो जाते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हो जाता है? और दोनों पार्टिकल का रेड्यूस्ड मास लेना पड़ता है. इधर रेड्यूस्ड मास कितने बेटा? म्यू इज इक्वल टू m1 into m2 अपॉन m1 plus m2 is equal to reduced mass हो जाता है. So the moment of inertia of these two particles about this axis of rotation is given by I is equal to mu r square है बेटा. Mu means what is the mu? Mu is equal to m1 m2 upon m1 plus m2 into r square is the moment of inertia of the system. ठीक है. नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखो बेटा, बेस्ड ऑन दिस concept. Suppose consider three identical particles है बेटा. Three identical particles, they are placed in the vertices of an equilateral triangle है बेटा.
वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स से हो, each of them having the mass m है ऐसा, ठीक है। Three identical particles are placed on the vertices of an equilateral triangle of side of length a बेटा, वो side of length a, वो भी side of length a, ठीक है। So find the moment of inertia of this axis of rotation. So this axis of rotation ऐसा घूम रहे, ठीक है, ऐसा घूम रहा सिस्टम, ऐसा घूम रहा, ऐसा घूम रहा, ऐसा घूम रहा। So find the what is that moment of inertia of the system about this axis of rotation. These two are nothing but a point particles से बेटा, वो point particles का radius भी नहीं रहते। So the moment of inertia of these two particles would be equal to 0 about this axis of rotation. It's very clear there. Next we should have to calculate what is the moment of inertia of this particle about this axis of rotation निकालना पड़ता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है बेटा, √3a/2 हो जाते हैं ना, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। The moment of inertia would be equal to I is equal क्या हो जाता है बोलो, I is equal to mr square, m into √3/2 into a of whole square, that is equal to m into 3a square upon 4, that is equal to 3/4 ma square हो जाता है। The moment of inertia about this axis of rotation is equal to ऐसा हो जाता है, ठीक है। Suppose consider another system ले बेटा ऐसा, 4 particles ले, 4 particle system, 4 particles of 4 identical particles, point particles are placed on the corners of a square है बेटा, square of side of length ये ले, ठीक है। So find the moment of inertia, find the moment of inertia of this axis of rotation, of this axis of rotation का moment of inertia कितने हो जाते हैं, अब इस axis of rotation का moment of inertia कितने हो जाते हैं बेटा, these two are a point particles हैं, so the moment of inertia with respect to these two particles would be equal to 0 है। Next the moment of inertia would be equal to the remaining of rotating of these two particles हो जाता है, ठीक है। So what is that, this length is ये है ना, this length भी ये है, I is equal बोलो about this axis, I is equal to 2ma square हो जाता है। Each particle having the mass m है बेटा, each particle has the mass m ऐसा, ठीक है। Suppose find the moment of inertia about this axis of rotation, axis of rotation ऐसा है, axis of rotation ऐसा है, axis of rotation ऐसा परपेंडिकुलर है, ऐसा परपेंडिकुलर है। इसका डिस्टेंस कितने हो जाते हैं बोलो बेटा, इसका डिस्टेंस √2 हो जाते हैं ना, और एक लेंथ का ये दी है, इसका डिस्टेंस √2 ये हो जाता है, ठीक है। सो द मोमेंट ऑफ दिस पार्टिकल और दिस पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी पॉइंट लो, इधर ले रहा हूं, इधर ले रहा हूं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय, कितने हो जाते हैं बोलो, वो भी √2 हो जाते हैं, √2 ये हो जाता है अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस दिस टू पार्टिकल्स हैविंग द सेम डिस्टेंस, दैट इज I is equal to I dot, ओ I dot ले रहा हूं, I dot is equal to ma square plus ma square, that is equal to 2ma square, ठीक है, प्लस इसका डिस्टेंस कितने है √2 है, m into √2a होल स्क्वायर हो जाता है बेटा, that is equal to 2ma square, 2ma square plus 2ma square है, 2ma square हो जाता है, that is equal to 4ma square is what is that moment of inertia of the system about this axis of rotation, about this axis of rotation ऐसा चल रहा है ऐसा, ठीक है। लिखो, देखो बेटा, moment of inertia of extended mass bodies, that means different types of the bodies. Suppose consider a rod of length L and mass m, so which is rotating with respect to axis of rotation like this, making an angle of theta beta. With respect to axis of rotation, its moment of inertia would be is ICM is equal to ml square by 12 into sin square theta हो जाता है about this axis. If theta is equal to 90 degrees हो जाए तो ऐसा हो जाता है, if theta is equal to 90 degrees, ICM is equal क्या हो जाता है बोलो, ICM is equal to ml square by 12, ठीक है। Next consider another rod of mass m and length L है बेटा, which is rotating like this with respect to axis of rotation, ऐसा rotate कर रहा है, which is making an angle of theta है बेटा। इसका moment of inertia about this axis of rotation I is equal to ml square by 3 into sin square theta हो जाता है about this axis of rotation, ठीक है। Next ring ले बेटा, ring has a mass m and radius r है बेटा, about this axis of rotation ICM is equal to mr square हो जाता है, about this tangent क्या हो जाता है बेटा, tangent
I tangent is equal to mr square plus mr square. ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करो, दैट इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर हो जाता है। वो प्लेन का क्या हो जाता है बोलो, वो प्लेन का, वो एक्सिस का आईसीएम का आधा हो जाता है, दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 हो जाता है। वो प्लेन का, पैरेलल टू प्लेन का, वो आईसीएम का आधा हो जाता है, बिकॉज ऑफ इट इज अ सिमेट्री बॉडी। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन आईसीएम इज इक्वल हो जाता है बेटा mr square by 2, okay, which is perpendicular to is the plane, parallel to the plane को क्या हो जाता है बोलो, about this axis parallel to the plane का आधा हो जाता है, mr square by 4 हो जाता है, इससे parallel to the plane का, ठीक है। about this tangent क्या हो जाता है बोलो, tangent का it is equal to mr square by 2 plus mr square, कितना हो जाता है बोलो, 3 by 2 mr square हो जाता है, ठीक है। Next, moment of inertia of the hollow cylinder. Hollow cylinder means this is a ring. When you have pressure like this, it would be forming a ring. Okay, that is called its moment of inertia about this axis ICM is called क्या हो जाता है बोलो, mr square हो जाता है। about this tangent, tangent का axis क्या हो जाता है बेटा, I tangent is equal to mr square plus mr square, कितने हो जाता है बोलो, I tangent is equal to 2 mr square हो जाता है। This is the moment of inertia of the hollow cylinder है बेटा, this is a hollow cylinder. Next, moment of inertia of a solid cylinder है बेटा, solid cylinder means when we have to press it like this, the solid cylinder would be converted into the form of a disc, ऐसा disc हो जाता है, ठीक है, disc of mass m and radius r है बेटा। So the moment of inertia of the disc mr square by 2 हो जाता है ना, mr square by 2 about this axis of rotation ICM is इक्वल कितने बेटा, ICM is equal to mr square by 2। about this tangent के लिए क्या हो जाता है, IT is equal to mr square plus mr square by 2, that is equal to I tangent is equal to 3 by 2 mr square हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और रेक्टेंगुलर प्लेट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, कंसीडर रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ लेंथ L एंड विड्थ V है बेटा। about this axis of rotation ICM is equal क्या हो जाता है, ICM is equal to m by 12 into L square plus B square का बराबर हो जाता है, B square। suppose if L is equal B, if L is equal B हो जाता है तो ICM is equal क्या हो जाता है, that is equal to m L square by 6 हो जाता है, ठीक है, ठीक है, m L square by 6 हो जाता है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्यूब है बेटा, कंसीडर ए क्यूब ऑफ साइड ऑफ लेंथ ये है। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है बोलो, अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू, अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू ma स्क्वायर बाय 6 हो जाता है, वो ma स्क्वायर बाय 6 है। अबाउट दिस कॉर्नर का I1 इज इक्वल क्या हो जाता है, I1 इज इक्वल टू I1 लो, अबाउट दिस कॉर्नर का, अबाउट दिस कॉर्नर का I1 इज इक्वल टू 2 by 3 ma स्क्वायर हो जाता है। about this plane का, about this plane का क्या हो जाता है बोलो, about this plane का 5 by 12 into ma स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हेलो स्फीयर है बेटा। नेक्स्ट one is moment of inertia of hollow sphere। hollow sphere का क्या हो जाता है बोलो, consider a hollow sphere of mass m and radius r है, and axis passing through like this, ऐसा diameter है बेटा, mass m and radius r है, वो hollow sphere है, ठीक है। so the moment of inertia of the hollow sphere about this diameter passing through the center perpendicular to the plane ICM is equal क्या हो जाता है, 2 by 3 mr square हो जाता है। about tangent को क्या हो जाता है, IT is equal क्या हो जाता है बेटा, IT is equal to mr square plus 2 by 3 mr square है। so IT is equal क्या हो जाता है बेटा बोलो, IT is equal क्या हो जाता है बोलो, IT is equal to 5 by 3 mr square, 5 by 3 mr square हो जाता है। This is the moment of inertia of a hollow sphere, ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर है बेटा, एक सॉलिड स्फीयर देखो, सॉलिड स्फीयर
ऑफ मास m एंड रेडियस आर है, वो सॉलिड स्फीयर है बेटा, सॉलिड स्फीयर, एंड एक्सिस इज पासिंग थ्रू लाइक दिस, ऐसा चल रहा है, ठीक है। ऐसे में इसको क्या हो जाता है बेटा, 2/5 mr² है ना, 2/5 mr²। अबाउट टैंजेंट का क्या हो जाता है, IT इज इक्वल बोलो mr² प्लस 2/5 mr² हो जाता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू IT इज इक्वल क्या हो जाता है 7/5 mr² हो जाता है। नेक्स्ट वन देखो बेटा, वो कोन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कोन ऑफ मास m एंड रेडियस r है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास ICM इज इक्वल कितने हो जाते हैं 3/10 mr² हो जाता है, ओके। सपोज इट हैज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट, द रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है ma²/6, ऑलरेडी वी हैव गॉट इट नो। If L is equal to what happening, ICM is equal to ml²/6, okay। ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड, सो जो ध्यान होना पड़ता है ऊपर, ठीक है। देखो अरे एक प्रॉब्लम देखो बेटा 2025 JEE मेंस से पूछे, बट बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखो इधर, टू आयरन सॉलिड डिस्क्स ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेसेस हैव द radii r1 and r2 and moment of inertia I1 and I2 दिए बेटा respectively। One more condition was given, r2 is equal to 2r1, the ratio of moment of inertia of 1 to 2 would be is equal to 1/x है, इससे x निकालना पड़ता है। इसमें क्या दिए बोलो, 2 आयरन डिस्क दिए, वो एक डिस्क है, ठीक है, वो आयरन डिस्क है, इसका मास कितने बेटा, मास m ले, मास m एंड रेडियस कितने r1 ले, r1। नेक्स्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है बेटा, एंड सेकंड डिस्क दिया है, ऐसा सेकंड डिस्क है, और सेकंड डिस्क का रेडियस दिया, रेडियस कितने दिए बेटा, रेडियस r2 इज इक्वल टू 2r1 दिए, सो इसका मास m2 इज इक्वल कितने, वी डोंट नो, दैट इज वी शुड हैव टू कैलकुलेट। First of all, this discs have the only surface mass density है बेटा, इसका surface mass density, इसका mass m0 ले, m1 is equal to m0 ले, ठीक है। सिग्मा is equal to m upon a, m is equal to सिग्मा ही हो जाता है, that is सिग्मा into pi r² हो जाता है ना, pi r1², ठीक है। m0 that is equal to m1 ले, सिग्मा is equal to m0 is equal to pi r1²। नेक्स्ट इसका मास m2 इज इक्वल क्या हो जाता है बेटा, सिग्मा इंटू ए हो जाता है, दैट इज m2 इज इक्वल सिग्मा इंटू पाई r2² है, ठीक है। बट r2 वैल्यू कितनी है, r2 इज इक्वल 2r1 दी है, m2 इज इक्वल बोलो सिग्मा पाई इंटू 4r1² हो जाता है। बट इसके वैल्यू कितने बेटा, m2 इज इक्वल बोलो इसके वैल्यू कितना हो जाता है, बोलो इसके वैल्यू कितना हो जाता है, बोलो इसके वैल्यू 4m0 हो जाते हैं ना, इसका मास मिल गया, इसका मास मिले, और दोनों का रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है, दैट इज I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू m1 r1² अपॉन /2 बाई m2 r2² अपॉन 2 हो जाता है, बिकॉज ऑफ जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू mr²/2 है, ठीक है। m1 इज इक्वल कितने बेटा, m0 ले, r1² मीन्स r1² है, बाई 2 टू गेस कैंसिल करो, बाई m2 इज इक्वल कितने बेटा 4m0 इंटू r2² इज इक्वल 2r1² हो जाते हैं, ठीक है। m0 r1² अपॉन 16 m0 2 2 4 4 4 16 m0 r1² हो गया बेटा, वो r1² m0 गेस कैंसिल है, 1/16 मिली है, ठीक है। दिस वैल्यू यू शुड कंपेयर विथ 1/x है, इसे x इज इक्वल कितने बेटा 16, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, देखो हर एक प्रॉब्लम देखो बेटा। A string is wrapped around the rim of a wheel of moment of inertia 0.4 kilogram meter square and radius 10 centimeters दिए बेटा। The wheel is free to rotate about its axis. Initially the wheel would be at rest, that means its initial velocity would be 0 दिए। The string is now pulled by force of 40 newtons. The angular velocity of the wheel
after 10 seconds would be is the x रेडियंस से बेटा, then find the value of x निकालना पड़ता है, ठीक है। वो भी कैसा करना पड़ता है बोलो, एक व्हील दिए, व्हील और व्हील ऐसे है और व्हील है ऐसा, व्हील फ्रीली रोटेट करते हैं बेटा, और व्हील ऐसा फ्रीली रोटेट करते हैं, ओके, इंजन से ऐसा फ्रीली रोटेट करते हैं, ठीक है। इसका रेडियस दिए बेटा, इसका रेडियस कितने, और व्हील का रेडियस कितने दिए, इसका रेडियस आती है r इक्वल कितने, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिए, फिर r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिए, दैट इज इक्वल 0.1 मीटर हो जाते हैं। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए बेटा, एबोन इस एक्सेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इज इक्वल कितने दिए, 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिए। Initially the string would be equal to s, that means its initial angular velocity would be equal to 0. So when the string is pulled with a force of F, after t seconds, let us, after 10 seconds, after t is equal to 10 seconds later, so what would be the its angular velocity, omega f is equal कितने हो जाते हैं, वो भी निकालना पड़ता है, ठीक है। When it is pulling like this, then what happening is about this fixed point, the torque would be acting over it. So the torque tau is equal क्या हो जाता है बेटा, r cross f is equal to I alpha को बराबर हो जाता है ना, torque tau is equal to I alpha. This question was asked based on the concept of torque है बेटा। So r value दिए 0.1 into f value also was given 40 is equal to I value also given 0.4 है, 0.4 इंटू अल्फा है, ठीक है। अल्फा इक्वल कितने मिल गए, वो भी दोनों में गैस कैंसिल हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा वैल्यू मिल गई। सो आफ्टर 10 सेकंड्स लेटर, सो व्हाट वुड बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी, वो भी निकालना पड़ता है, ओके। अल्फा इज इक्वल क्या है बेटा, अल्फा इज इक्वल ऑलरेडी नो, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी हो जाता है, ओमेगा एफ बाय टी हो जाते हैं, ओमेगा एफ ले, ओमेगा एफ इज इक्वल टू अल्फा टी हो जाता है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एफ इज इक्वल टू अल्फा वैल्यू, ऑलरेडी वी हैव गॉट इट। नेक्स्ट टू टी आल्सो, व्हाट इज द टी, टी वैल्यू आल्सो गॉट इट, व्हाट इज द टी, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड्स, दैट इज ओमेगा एफ इज इक्वल कितने बेटा, 100 रेडियन पर सेकंड हो जाते हैं। बहुत आसान प्रॉब्लम, 2024 में जेईई मेंस में पूछा प्रॉब्लम था। 3 balls of masses 2 kilograms, 4 kilograms, 6 kilograms respectively, और अरेंज वैसा ऐसा अरेंज किए एट द इक्वेटोरियल ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ 2 meters दिए, और 2 meters the moment of inertia of the system about an axis the centered and perpendicular to the plane है बेटा, ऐसा निकालना पड़ता है। So the moment of inertia perpendicular to the plane means ऐसा निकालना पड़ता है, the moment of inertia ऐसा निकालना पड़ता है। इधर m1 पार्टिकल लगा दिया, ठीक है, इधर m2 पार्टिकल लगा दिया, इधर m3 पार्टिकल लगा दिया, ठीक है। So the moment of inertia about the axis passing through the plane perpendicular to the plane है। वो डिस्टेंस कितने हो जाते हैं बोलो, वो डिस्टेंस तीनों का डिस्टेंस बराबर ही है, और x इज इक्वल टू 1/√3 हो जाता है, ठीक है, x इज इक्वल 1/√3 है। सो इसका मास m1 इज इक्वल कितने बेटा, 2 किलोग्राम्स किया, इसका मास m2 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम्स, इसका मास m3 इज इक्वल कितने, m3 इज इक्वल टू 6 किलोग्राम्स दिए, ठीक है। वो डिस्टेंस क्या है, √3/2 है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, 1/√3 हो जाता है, वो भी 1/√3 है, ठीक है, वो भी 1/√3 हो जाता है, तीनों का डिस्टेंस सेम है। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mnet into r perpendicular square, that is I net is mnet कितना बेटा, 2 + 4 6 + 6 12 into 1/√3 of whole square है बेटा, I is equal to 12 into 1/3 हो जाता है, 3 1 3 4, that is I is equal to 4 kilogram meter square हो जाता है। About this axis, about the centroid of the axis passing through perpendicular to the plane का moment of inertia कितने, 4 kilogram meter square हो जाते हैं।
ठीक है, लिखो। और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, और 2024 JEE में से मुझे बहुत आसान प्रॉब्लम है। To identical spheres each of mass 2 kilograms and radius 50 centimeters are fixed at the ends of a light rod so that the separation between the centers is 150 centimeters. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the middle point is x by 20 kilogram meter square. Then find the value of x है बेटा। क्या दिया? To identical space दिए। This is a one of the sphere and this is a other one of the sphere. तो दो भी identical spheres है। Each of them having the mass m is equal to 2 kilograms and radius r is equal to 50 centimeters दिए बेटा। That is equal to 1 by 2 meters. These two centers are separated by at a distance of 150 centimeters. 150 सेंटीमीटर है और दोनों का बीच का डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर हो गया है। दोनों बीच का डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर हो गया। इसका रेडियस 1/2 मीटर है और इसका रेडियस भी कितने बेटा 1/2 मीटर। इसका मास 2 किलोग्राम से है और इसका मास कितने दिए 2 किलोग्राम दिए। ठीक है, we should have to calculate the moment of inertia about an axis passing through perpendicular to the plane, passing through the center and perpendicular to means ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकालना पड़ता है। और पूरा 150 है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाता है बेटा 150/2 दैट इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर्स। दैट इज इक्वल टू 75/100 है ना, दैट इज इक्वल टू 3/4 मीटर्स हो जाता है। इसका दूर 3/4 मीटर्स है, इसका दूर 3/4 मीटर्स हो जाते हैं। ठीक है, these are the which is space है बेटा solid space है। ठीक है, the moment of inertia about this axis of rotation, इसमें parallel axis theorem यूज करना पड़ता है। what is the parallel axis theorem? the moment of inertia about an axis passing through a plane lamina which is equal to कितना हो जाता है, इसका पूरा प्लेन लैमिना पर है। ऐसे में इक्वल क्या हो जाता है बेटा I0 प्लस md स्क्वायर हो जाता है। ऑलरेडी नो इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। The moment of inertia about an axis of a plane lamina or ICM is equal to what is this? This is ICM है। ICM is equal to I0 plus md स्क्वायर हो जाता है। ओके, इसका मास है, इसका पैरेलल एक्सिस है, वो भी यूज करो इधर। So about this axis is equal to I is equal to 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर है। ऐसा कितने हैं? दो है, दो भी है, ऐसा दो भी है, दो शॉर्ट स्पेस से है। ओके, दोनों शॉर्ट स्पेस के वो प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है। दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू इंटू 2 है ना, 2/5 mr स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1/2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस md स्क्वायर मीन्स 2 है। डी वैल्यू कितना बेटा, डी वैल्यू इज 3/4 ऑफ होल स्क्वायर इंटू 2 करो, इंटू 2। दैट इज I इज इक्वल टू 53/20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और 53/x से कंपेयर करो, इससे x वैल्यू कितने मिलते हैं बेटा 53/x और 53/20, 53/20 से कंपेयर करो। और भी कितने दिए x/20 दिए, x/20 से कंपेयर करो। इसे x इक्वल कितने मिल जाता है बेटा x इज इक्वल टू 53। ठीक है, ऐसा सोचना प्रॉब्लम करना पड़ता है। प्रॉब्लम देखो बेटा, 7 सर्कुलर प्लेन डिस्क ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r है। मास m एंड रेडियस r है बेटा। ओके, वेल्डेड सिमेट्रिकली है शोन इन द फिगर। ऐसा सिमेट्रिकली वेल्ड किए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, ऐसा निकालना पड़ता है। ऐसा इसका दूर कितना हो जाता है बेटा 2r हो जाता है अबाउट दिस एक्सिस। above this axis 2r हो जाते हैं, above this axis 2r, above this axis 2r, above this axis 2r, above this axis 2r हो जाते हैं। The net moment of inertia above this axis is given by I is equal कितना हो जाता है बेटा, और I0 ले, I0 is equal क्या हो जाता है 7 into mr square by 2 plus 6m है ना, m plus m 6m। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस above this axis कितने बेटा 2r है।
दैट इज इक्वल टू 2r होल स्क्वायर हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 7/2 mr स्क्वायर प्लस 24 mr स्क्वायर हो जाता है, 24 mr स्क्वायर दैट इज इक्वल कितना हो जाता है बेटा 55/2 mr स्क्वायर। अबाउट दिस एक्सिस द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट इज इक्वल कितना हो गया बेटा 55/2 mr स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अबाउट दिस पॉइंट निकालना पड़ता है, अबाउट दिस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू दिस, वो दूर कितना हो जाता है बोलो बेटा, दिस इज इक्वल टू 2r प्लस r और पूरा 3r हो जाता है, इसका पूरा डिस्टेंस कितना हो जाता है 3r हो जाता है। अबाउट दिस पॉइंट P IP इज इक्वल टू I नॉट प्लस 6m इंटू 3r है ना, 3r होल स्क्वायर हो जाता है, 6m है ना पूरा 1 2 3 4 5 6 7 है, 7m इंटू 3r स्क्वायर हो जाता है, 7m इंटू 3r स्क्वायर है, दैट इज IP इज इक्वल टू I नॉट कितने हो गया बेटा 55/2 mr स्क्वायर प्लस 7m इंटू 9r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 181/2 mr स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, लिखो।